हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम गाइस। ऐसे प्रियांक देख पा रहे हो, तुम पहले आए हो इस बार आज। हेलो ड्रैको भैया, कैसे हो? ड्रैको भैया फाइनली, हाँ मैंने देखा हाइड्रोआरकॉन का ड्रिप मार्केटिंग हो चुका, अपडेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर अपडेट नहीं किए हो तो अपडेट ज़रूर कर लो, प्री अपडेट का लाइक प्री इंस्टॉलेशन अपडेट का फाइनली आ चुका है। आई एम सो कूल कैरेक्टर हाइड्रोआरकॉन ड्रैको। हाँ एक्चुअली या 20 plus Furina equal to thumb. Yes. Actually I found it yesterday night. Actually होयो लैब में मैं ऐसे ही घूम रहा था डेली चेक इन के लिए। नीचे वो सजेशन नहीं रहता, वहाँ पे किसी एक बंदे ने, नाम नहीं पता सॉरी मैं नाम भूल गया तो क्रेडिट नहीं देख पाऊंगा उसको, बट वहाँ पे देखा कि बंदे ने वेंटी है, वेंटी का वो लेके उसने फुरीना वाला आर्ट किया है, तो मैंने वही आर्ट लेके आज थंबनेल पे चिपका दिया। सो या दैट्स दैट। हे इनफेमस, वेलकम टू स्ट्रीम इनफेमस। Hey Vats, welcome to stream again. नेट दे दो, प्री अपडेट कर दूंगा। 20 प्लस पुरीना इक्वल टू माई बेसमेंट। इनफेमस आते ही शुरू हो गया। टू बी ऑनेस्ट 20 इज द बेस्ट। क्या कहते वो वो क्या कहते उस चीज को, वाइफू कह सकते हो। लाइक 20 इज द बेस्ट वाइफू। when gameplay come HydroArchon probably 2 to 3 days after that। मतलब लीक्स का अगर बात बोल रहे हो तो ऑब्वियसली अभी मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकता, अदरवाइज they will shut down my stream, so yeah I don't wanna risk that part, so let's not talk about leaks here। क्योंकि ऑलरेडी किट वेट सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, लाइक ऑफिशियल किट आ चुका है कि कैसे होने वाला है। तो वो डिस्कशन हम उसमें कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं। वेंटी का फ्रेंच वर्जन एकदम कड़क है। हाँ वो तो है, उसका वॉइस एक्टर ने बहुत अच्छा लाइक किया दिया है वो फ्रेंच वाला वॉइस। ओके आई अंडरस्टैंड। हाँ समझ रहे हो ना, मतलब मतलब जेंशिन वाले थोड़ा सेंसिटिव है लीक्स के ऊपर, यू नो। लीक तो फुरीना का कर दूंगा। इनफेमस भाई अपने हारपून के साथ रेडी है यहाँ पे फुरीना का लीक करने के लिए। डिस्कॉर्ड पे टेल मी अबाउट हर किट। हाँ हाँ जरूर। वेंटी मीम इक्वल टू वेंटी फ्रेंच। वो क्या था लाइन, ओहो ट्रेवल यार यू से ग्लाइड इन मी फास्टर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही करके कुछ था, लेकिन एक्सेंट बहुत अच्छा था। बोजू यू फकिंग एस और समथिंग लाइक दैट। हर किड्स। हाँ मतलब अगर नहीं बात कर सकता, सॉरी अभी यहाँ पे तो नहीं बात कर सकते फिर। लाइक पूरा किट मुझे पता है कि क्या होने वाला है, स्केलिंग अभी पता नहीं चला है, बट हाँ किट कैसे काम करने वाला है, ओशियन हुआ वाला कैसा फीचर होने वाला है वो पता चल गया। हाँ वो मैं बता सकता हूँ, लाइक ऑन फील्ड पे ओशिया रहेगा, ऑफ फील्ड पे ओनुमा, सो इस लाइक दैट। और हाइड्रोआर्कन का कॉन्सेप्ट ये है कि मारे भी हम बचाए भी हम, ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, लाइक ये हिंदी में मैं इतना ही बता सकता हूँ, अभी बाकी सब कुछ उन लोगों को पता चल जाएगा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आई विल कम लेटर ओके ड्रैको। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं अभी जस्ट डेलीज ही कर रहा हूँ अपना, उसके बाद हम लेनी वाले क्वेस्ट पे जाएंगे क्योंकि अपडेट आ चुका है और आई डोंट वाना पाइल अप माई क्वेस्ट, सो वही। अरे मेरा आज थोड़ा सा नेट का भी इशू चल रहा है, देख मेरा पिंग थोड़ा सा हाई है। यूजुअली मेरा रहता है लाइक 50 के करीबन पिंग, 150 के करीबन की 40 के करीबन पिंग रहता है, बट 200 जा रहा है आज, तो थोड़ा सा नेट का भी इशू चल रहा है। ये क्या करना है, मुझे पिक्चर लेना है, ले लिया पिक्चर। लो तुम अगर बोलते हो तो हम पिक्चर भी ले लेंगे। डज दैट। स्ट्रीम स्ट्रीम पे मत देखना। नहीं देखूंगा ऑब्वियसली भाई। क्योंकि अगर मैंने देख लिया या फिर बात भी बोल दिया ना किट के बारे में, लाइक तो स्ट्रीम दे माइट टेक डाउन। लाइक हाँ हिंदी में अगर बोलूँगा तो उनको घंटा पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट थिंग इज कुछ वर्ड वो पकड़ के डाल सकते हैं फिर भी। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क माई स्ट्रीम टेकिंग अवे बाई देम, वो वाला सीन, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड लीक्स के ऊपर। सो हाँ
ऐसे ही धीरज ने तो डाल ही दिया है, तो बाकी तो तुमको पता ही है वत्स कहाँ पे मिल जाएगा तुमको चीजें, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो। या बट मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि मारे भी हम बचाए भी हम, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लाइक जाए तो जाए कहाँ अभी। रुक जा, मुझे ऑल मैसेजेस करने दो पहले, क्योंकि शायद मेरा ऑल मैसेजेस नहीं है तो मैं तुम सबका मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, और आज मेरा ओबीएस का कुछ नशा चल गया है, सो वो मुझे चैट्स नहीं दिखा रहा है। इन्होंने प्लंज अटैक क्यों नहीं डाला, ये मुझे जानना है। तो आज मैं तुम लोगों का चैट मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ, बिकॉज पता नहीं ओबीएस का क्या नशा हुआ, और वो मुझे अभी कुछ स्ट्रीम लिट वाला जो सीन है वो अभी दिखा नहीं रहा है मुझे। फिल्टर मैसेज ऑन करोगे तो मेरा चैट कैसे पढ़ पा। अरे फिल्टर मैसेज ऑफ ऑन था, उसको ही मैंने बंद किया अभी अभी। लाइक अगर मैंने फिल्टर मैसेज ऑफ नहीं किया होगा तो तुम लोगों का आधा मैसेज तो आएगा ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोगों का मैसेज कौन आ रहा है। तो मैंने अभी अभी ऑफ किया वो, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आता है। और नॉर्मली मेरा क्या होता है कि स्ट्रीम लैब का जो रहता है लाइक एक्सटेंशन, वो ऑटोमेटिक हटा देता है। बट इस बार क्या किया, हटा नहीं हटाया उसने, क्योंकि मेरा ये नशा कर रहा है। मेरा तो नॉर्मल चैट भी फिल्टर होकर आता है। अबे नहीं नहीं, मैं वहां पे फिल्टर चैट ऑन कर रहा था और ये मर गया। What the hell dude, यार ये क्या सीन हुआ। मैं चैट पढ़ रहा था और मैंने देखा नहीं, वहां पे फिल्टर चैट ऑन कर रहा था मैं, लाइक ऑफ कर रहा था। क्या लिखा, हाँ वो भी है, पर मैंने जो भेजा वो देखा अभी, पर स्ट्रीम की स्क्रीन, हाँ वो अभी भी मेरा वहाँ पे ही है, लाइक क्या कहता है अनरीड मैसेज पे पड़ा हुआ है, और मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं घुसने ही नहीं वाला हुआ वाला चीज़। यूट्यूब भी लाइक कंसर्निंग इन्फेमस कुनेक्स। हाँ वो तो है इन्फेमस, कि उनको पता है कि इस बंदे को पहले ही फिल्टर में डालो, लाइक कुछ भी बोले इसको पहले फिल्टर में डालो, बाकी सब बात बात का बात है, बट पहले इसका बातों को फिल्टर में डालो, नो मैटर व्हाट ही इज स्पीकिंग और टाइपिंग। ये इतना दूर क्यों जाने बोल रहा है, मैं ग्लाइड करके क्यों जा रहा हूँ इतना दूर, मैं यहाँ से टीपी क्यों नहीं कर रहा हूँ। एक मेरा कौन सा नशा आ गया ये वाला, व्हाट द हेल। ओ ऐसे एचएसआर का अपडेट भी आ रहा है, लाइक अपडेट स्ट्रीम आने वाला है 29 को, लाइक अपडेट क्या आने वाला है 1.4 का, सो दैट इज अ ग्रेट न्यूज़ ऑल्सो। एंड अगेन डोंट गो फॉर फूशन। तो वो भी है, जो लोग एचएसआर खेल रहे हैं उनके लिए तो अच्छा न्यूज़ है। लाइक आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वत्स और तुम खेल रहे हो इनफेमस। ओनली पे एचएसआर ऑन रेडी। समझ में आ गया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार। ऐसे तो मुझे कुछ काफका के पिक्चर चाहिए, तो मुझे मिल सकता है क्या इनफेमस काफका के पिक्चर्स? इफ यू नो यू नो। हाँ वही, मैं तो बोला कि मुझे कुछ काफका के पिक्चर्स चाहिए। कैन यू प्रोवाइड मी, ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, लाइक मॉडरेटेड, लाइक जो मैं स्ट्रीम के थंबनेल पे यूज़ कर सकूँ। लाइक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर समझ में आ गया तो फिर तुमको पता है कि कौन से भेजना है। स्कूल ऑलरेडी है 2D में, अच्छा ओके। आइए, एक्चुअली तुझे पता है ना उस इंसिडेंट के बाद मैं 2D और 3D कहीं पर भी नहीं जाता हूँ, लाइक एक बार हो गया था उसके बाद से। हाँ ज़रा मुझे मेंशन कर देना, लाइक वो 2D वाला सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइक मुझे डर लगता है वहाँ पे जाने पे। पता है। एक बहुत बहुत डेंजरस जगह है। नया वाला डोमेन करके सीधा क्वेस्ट पे हम लोग जाएंगे इस बार।
हाँ फिर वॉलपेपर है में। अच्छा वॉलपेपर वाला सेक्शन पे, ठीक है, ओके, आई विल चेक दैट आउट। सही में 2D खोलो नहीं दली। अबे ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ भाई ये क्या बात हुआ भाई, इनका क्यों है उधर? लाइक मुझे इन पे एक चीज बता, इनका क्यों है? लाइक व्हाई? जस्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हाई? इनका क्यों है उधर, मुझे ये जानना है सबसे पहले। व्हाई नहीं था? लाइक तो एक टाइम को तो मैं फिशल और उसका भी मान लूं, क्या कहते हैं उसका, क्या हाइड्रोआर्कॉन का भी मान लूं, बट नहीं था का क्यों? What the hell are you talking about? ये कौन सा बात है कि नहीं दकली मस्त है? What do you mean by that नहीं दकली मस्त है? ये कौन सा बात है? हाय ससी, वेलकम टू स्ट्रीम। ऐसे प्री अपडेट आ चुका है ससी, यू कैन इफ यू डोंट नो, और दे ऑलरेडी डिप मार्केटेड पुरीना। तो या आई एम एक्साइटेड अबाउट हर। ऐसे well in their official Twitter account they already drip marketing Purina, so yeah. Whoa okay 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 maybe, और probably their official YouTube channel पे भी उन्होंने किया है ससी, I think drip marketing, but I have no idea, but I saw it on Twitter. जिप तो मैं करूंगा पुरीना पे। Oh fuck, what the hell? Actually मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, anyone going for Nivelator or Weasley? Anyone? कोई जा रहा है क्या उन दोनों के लिए? लाइक आई माइट प्रोबेबली गो फॉर विजली। आई से माइट बिकॉज क्योंकि आई नीड टू सेव अप फॉर सम विशेस, सो या। टेंशन मत लो, होयो वर्ड से ही पहले मेरा चैट पता चल गया मुझे। आई नो अभी क्या कर सकते हैं, तुम अकेले सिंगल हैंडेडली मेकिंग माई एंटायर स्ट्रीम सस, सो या दैट्स दैट। अभी उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ये जो नया वाला डोमेन है, ये कब तक फार्म करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा एक्चुअली। प्रियांक था ये यहाँ पे, वो मेरा चैट को प्रोसेस ने कर पाया। अच्छा ओके। अरे मुझे एक चीज बता, तूने फिर से प्रियांक को बैन दिया है अपने सर्वर पे? मैंने देखा, लाइक वो बता रहा था तूने फिर से बैन दिया उसको। लाइक चल क्या रहा है, 2 दिन बाद तो मैं देखता हूँ तुम लोग बैंड खेलते हो, लाइक ये क्या बात हुआ? वो बता रहा था कि तुमने उसको फिर से वो बैन दिया। What the hell? लेट्स अपग्रेड दोस। वो 2 जो मिला है वो एक्चुअली करता है, मैं बैन करता हूँ, सिंपल। ऐसे इस बार का बैंड कितने दिनों के लिए है? आई वांट टू नो, लाइक इस बार का बैंड कितने दिन के लिए है? इसी का इसका नहीं मिला था परमानेंट। ऐसा तो हर बार का बोलते हो तुम, परमानेंट है, फिर जाके तो ले लेते हो। ये क्या बात है, ऐसा परमानेंट थोड़ी ना चलेगा।
ये मेरे फिशल के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है काइंड ऑफ। अरे डिफेंस आ गया, अरे काश की सारे के सारे क्रिट रेट या फिर क्रिट डैमेज पे जाए, ज़्यादा नहीं, 6 to 21 चला जाए ना, उसमें ही मैं खुश हूँ। 2 वीक तो चला गया कोई ना, 3-4 वीक में हो जाएगा आई थिंक। आई मीन लाइक दे दो, लाइक देखो तुम अगर सॉरी वॉरी बोलता है कि जैसे पिछली बार बोला था, फिर तो वो आके फिर से बोलेगा कि मेरा और इनफेमस के बीच में सब कुछ ठीक हो गया पहले जैसा। सो या दैट्स दैट, अगर ऐसा है तो ठीक है। लाइक जैसा पिछले बार बोला था, बोलता है कि 1 महीने से सॉरी नहीं लगाएगा कार्ड, लगाएगा कार्ड तुम लोग तो फिर कार्ड से खेलते हो, लाइक मैं भूल गया तुम्हारा आधा झमेला तो कार्ड से ही शुरू होता है, कार्ड पे ही आके खत्म होता है। लाइक कुछ क्या था उस पिछले बार किसका था, नेजुको वाला कार्ड पे शायद था आई गेस तुम लोगों का झगड़ा, आई थिंक हुआ था तुम लोगों का नेजुको वाले कार्ड पे। सो या तो उसी चीज पे तुम्हारा शुरू हुआ था, फिर खत्म उसी चीज में हो गया समथिंग। वो बता रहा था कि तुमने कार्ड ले लिया, उसने समन किया, तुम लोगों ने हल्ला मचा के ले लिया वो कार्ड, लाइक ये क्या बात हुआ तो वो गुस्सा हो गया और फिर तुमने उसको बैंड कर दिया मुझे वो हिलेरियस लगता है कि कार्ड के ऊपर बंदे लोग इतना एग्रेसिव कैसे हो सकता है। जस्ट अ प्लेइंग कार्ड, वो प्लेइंग कार्ड भी नहीं है, लाइक वर्चुअल कार्ड है। हाउ, अरे यार कितना अच्छा पीस जा रहा था यार, सच में बहुत अच्छा पीस जा रहा था। मैं 1% से ही कार्ड ले रहा था, उसका डीएम में जाके मैंने कर रहा कि इनफेमस को मत दे। वाओ अभी इस पे मैं क्या करूं इस पे तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लाइक ये बहुत अच्छा जा रहा था यार, हक दिया इसने बीच में। जो ये पायरो पे अगर डैमेज आ गया तो बहुत अच्छा हो सकता है ये, अगर क्रिट डैमेज, ये मेरा पहला फिर वो पायरो कप होगा जिसमें क्रिट डैमेज आएगा, मतलब क्रिट रेट क्रिट डैमेज एक साथ आएगा। बेकार है, हम नहीं करना है, बस देख लिया, नहीं करना है। हे रेंजर, वेलकम टू द स्ट्रीम। किसका कौन सा कार्ड ले लिया? अरे पता नहीं, इनफेमस का कार्ड लाइक लिया नहीं है, लाइक प्रियांक ने उसका कार्ड को कुछ जो जिससे डील कर रहा था उसको बोल रहा था कि मत दो और दो समथिंग, कुछ पता नहीं इनका नशा है कुछ कार्ड का। सो दे गॉट फाइट एंड तुम्हारा प्रियांक ने उसको बैंड दे दिया, नहीं सॉरी इनफेमस ने उसको बैंड दे दिया। लड़की है क्या जो डीएम में हग रहा है? डीएम में हग रहा है मतलब सामने से ही मैं करना एफ, सामने से, अच्छा सामने से मना करना की बात बोल रहे हो, अच्छा ओके ओके ओके, मतलब पीठ पीछे कर रहा है, इस चीज पे तुम गुस्सा हो उससे। अभी इस पे मैं कुछ देखो, कार्ड के बारे में मुझे घंटा कुछ पता नहीं है कि क्या सीन है तुम लोगों का कार्ड के साथ, तो या अभी इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ जो चीज़ पे आइडिया नहीं है कि वो कार्ड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम लोगों के लिए। लाइक कलेक्टेबल आइटम जो कलेक्ट करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, तो याद अभी पता नहीं, ये तो गलत सीन है। लाइक कार्ड से ये याद आया मेरे को, सोफिन में राइडन शोगन का कार्ड ड्रॉप हुआ। ओ नाइस रेंजर, धोखाबाजी किया Purina with jet cutter looks promising. Yep, actually she's scaling, like her scaling was based on HP, like so that's why probably any weapon with HP percentage will work। जैसे जेट कटर फॉर एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे ही तुम्हारा फॉन्टेन वाला जो HP वाला स्वॉर्ड है क्राफ्टेबल, दैट्स वन आल्सो गुड। नीलू स्वॉर्ड ऑल्सो गुड, काजनिस्तान आई गेस, वो वाला भी सीन अच्छा है। और मी विथ 2 जेट कटर्स that's a very that's a lucky thing or unlucky thing, I don't know, but that's a pretty good thing that you have 2 jet cutters. So yeah, that's that, 44% crit rate and you don't have to worry about anything, and yeah that's that। बिजनोस, अच्छा बिजनोस है तुम्हारा ये। आपने डिस्कॉर्ड में मेरे को पिंग करना। ओके 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 ओके,
ओके आई विल डू दैट बट नॉट राइट नाउ। आफ्टर स्ट्रीम में ज़रूर पिंग करूँगा और मुझे ये क्वेस्ट पहले ख़त्म करना बिफोर द अपडेट। सो या ये मेरा लास्ट आखिरी क्वेस्ट है इस अपडेट वर्जन का। सो ये कर लेता हूँ। Basically Furina is like a hydro healer slash damage dealer, so it's like she will take your HP, also she will heal you, but depending on which stand you are, like ओशिया रूमावे के ऊपर उसका वो चेंज होता था, हीलर हो जाता है या फिर क्या कहते हैं डैमेज डीलर हो जाता है। तो इट्स लाइक शी वर्क लाइक दैट वे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता बिकॉज दे माइट बैंड माई स्ट्रीम। सो या किट जितना देखा है लीक्स पे उतना ही। क्या मतलब है सर्वर में नहीं हूँ? कौन सा सर्वर का बात बोल रहा है इनफेमस? तो हर सर्वर पे है। दैट टियर विल बी हर सिग्नेचर वेपन, नीलूज वेपन एंड जेट कटर। यप ऑब्वियसली probably her signature weapon have like 88% crit damage with HP percentage. तो या वो वाला हो सकता है एक्चुअली, पता नहीं अभी उसका सिग्नेचर वेपन का। जितना मुझे पता है कि 8 समथिंग क्रिट डैमेज है। You wanna trade or what? मेरे को समझा नहीं आया इनफेमस को आप क्या बोल रहे थे, cause I don't play those card games so much. Actually, I don't know either, Ranger. I have absolutely no idea what they are talking about with those cards. So, yeah, अभी उनको ही पता है कि वो क्या बात बोल रहा है। Yes, I want to trade, bro. अच्छा, ठीक है। देखो मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज़ का ट्रेडिंग का बात बोल रहे हो, but I absolutely no idea. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the एक चीज़ अच्छा हो सकता है, पता है? अगर हम लोगों को लेटेस्ट स्टोरी पे पता चला है क्या है, ये जो लेनी है ये भी एक हार्बिंजर है, लाइक सो या दैट वुड बी रियली कूल अगर ऐसा पता चला। टैग मी ऑन सूजा सर्वर, ओके इनवाइट मी। हाँ इनवाइट दे देना रेंजर उसको। अगर इनफेमस आएगा ना तो फिर प्रियांक भाग जाएगा सर्वर से, आई थिंक। And that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. Okay. All right, got it. Bye, Mr. Magician. शार्लेट भी आ रहा है उसके हाइड्रो आर्कॉन के साथ, आई थिंक। सो या हाँ इनफेमस में तुमने मैसेज डाला, मैंने देखा सर्वर इनवाइट कर दो, बट मैं अभी के लिए नहीं कर सकता हूँ, लाइक स्ट्रीम के बाद में कर देता हूँ तुमको इनवाइट। उधर से कोई अपना सर्वर का डीएम कर देना। कौन सा वाला रे रेंजर? वो तो तुम भी कर सकते हो आई थिंक, राइट क्लिक करके इनवाइट पीपल के ऑप्शन पे। आई थिंक वो तो सब में ऑप्शन है वो वाला। Oh please, you didn't believe that spiel, did you? I'm waiting for Arlecchino and Furina. I'm sure that child would beg to differ. Child? Like you were right अच्छा on the वो money. child। इस मुझे लगा यहाँ पे child कहाँ से आ गया? I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. Okay. He made it easy for me. सूजा भेज के स्ट्रीम पे सोफी ही नहीं है। सूजा भाई के स्ट्रीम पे सोफी ही नहीं है। सोफी, व्हाट यू मीन बाय सोफी? उधर का के अपने सर्वर का डिस्कॉर्ड आईडी। अच्छा तुम लोग अपना ही बात कर रहे हो, करो। 4.2 का बैनर नहीं तो दिया मेरा बैनर ने तोड़ दिया। अच्छा 4.2 का बैनर ने दिल तोड़ दिया। हाँ बाइजू आ रहा है, सो या मुझे भी उसके वजह से तो मैं विजली के लिए प्रोबेबली चला जाऊँ। लाइक मैं पहले सोच रहा था कि आई विल गो फॉर वेपन, बट इफ देयर इज बाइजू आई डोंट वांट दैट जेट कटर वेपन जो बाइजू का है एचपी वाला। आई हैव नो यूज फॉर इट टू बी ऑनेस्ट, सो it would be waste of primo gem in that banner, so I'm not going to. तो बहुत बेकार वाला होने वाला है फिर। इनफेमस थीप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये थीप यही है?
या फिर इसका बहना है या To फिर be इसका भाई है। honest, it makes me angry. Angry? Why? 4.2 उनको पता है कि उनको एक चीज उन्होंने देखा कि फुरिना इज रियली हाइप्ड कैरेक्टर, तो उन लोग अभी सबसे ज्यादा ट्रैश ट्रैश चीजें उस बैनर पे डालने वाले हैं। ट्रैश कैरेक्टर, ट्रैश वेपन्स, ट्रैश एवरीथिंग, बिकॉज उनको पता है कि पीपल आर गोइंग टू पुल फॉर दैट बैनर नो मैटर व्हाट। सो दैट्स दैट। You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing. ये पता है लूफिन द ग्रेट के बारे में सुना है तुमने? लूफिन वाला जो स्टोरी था, ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं, इंग्लैंड में जो चोरी करता था लूफिन द ग्रेट बोल के, लेटर दे के चोरी करने वाला, ये उसी स्टोरी का काइंड ऑफ लगता था। इंग्लैंड पे आई थिंक, हाँ इंग्लैंड में ही आई गेस। उसी स्टोरी का थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड बाय दैट स्टोरी लग रहा है मुझे, लुपिन द ग्रेट। जहाँ पे स्टोरी में ऐसा होता है कि जो बंदा सॉल्व करने के लिए जिस बंदे के पास जाते हैं पुलिस वाले हेल्प के लिए, वही बंदा रहता है लुपिन, और वो पूरा मैनिपुलेट करता है पुलिस वाले को उस चोरी के लिए, और लास्ट में जाके ये बोलता है कि आई वॉज दैट गाय। मेरा भी वेपन गया। यही इसीलिए तो बोला मैं, मेरे पास एनफ विश है, आई कैन गो फॉर विजली। अदर देन मुझे 240 विश मेरा हो रहा है 4.2 के एंड तक, मेरे पास 240 करीबन विश हो जाएंगे फॉर वेपन में फुरिना, और फुरिना का वेपन के लिए, क्योंकि वेपन बैनर गारंटेड नहीं है, और मुझे वेपन बैनर में एटलीस्ट 180 विश चाहिए होगा फॉर गारंटेड फुरिना वेपन। और फुरिना मेरा ऐसे ही कंफर्म फुरिना है, जो मुझे लगभग कितने 60 पुल के पहले ही मिलेगा, लाइक 40 पुल ऑलरेडी 30 का पेटी हो रखा है, और 40 पुल डालने पे मुझे फुरिना मिलने वाला है। सो बाकी जितने भी पुल है वो मैं वेपन बैनर पे डालने वाला था, बट अगर वेपन बैनर ट्रैश है तो जाने का कोई फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा मैं विजली के चला जाऊँ और 50-50 जाके मैं 50-50 के लिए फुरिना के लिए चला जाऊँ। आई ऑलरेडी हैव काजनिस्तान, तो काजनिस्तान उसको दे दूंगा नीलू वाला वेपन। दैट्स रियली गुड फॉर फुरिना। So that was my plan actually. So इसीलिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, But then again, अगर मैं बाइजू निकाल दूँ तो probably बाइजू का weapon is not so bad actually. अगर मैं बाइजू और फुरिना दोनों निकालूं, the mere but that's mention the of the stretch weasel's name is actually. enough to That's scare stretch. people off. So अभी तो once the live stream contents तक of wait that करना letter पड़ेगा, get out, like barely anyone will be showing up to watch my show. 45 days के बाद ही पता चलेगा कि But क्या I've आने been वाला है। preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. अच्छा, Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? ये पक्का उसी लूफिन द ग्रेट का स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है, सेम ही हुआ था, To ऐसे be ही चल रहा honest, था। I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Lenny. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. अच्छा, Thanks for the compliment, though I have to say, Magicians I are don't the care much true for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both क्या have the मैंने ability अभी to यही make चीज things बोला, disappear अभी without the यही person चीज noticing. बोला मैंने, लिटरली There's मैंने an अभी यही important चीज बोला। I difference that called it. these people overlook. I called it. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. Oh, what an expression. It's gone! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. Okay. That's a cool argument over If I there. could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. अच्छा अच्छा, क्लासिक मैजिक ट्रिक। शार्लेट का एक चीज देखा, इसका जिगल फिजिक्स थोड़ा ज्यादा ही काम करता है, लाइक शार्लेट का थोड़ा सा हिलते ही लाइक पूरा हिल जाता है जिगल फिजिक्स पे। मैंने ये चीज नोटिस किया है। Right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Lenny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take Okay. offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death,
A lot of people associate magicians with criminality. सीसर्स Quite सीसर्स कौन था सीसर्स? ये कौन है सीसर्स? I can imagine. अच्छा, Going वो back to your फैंटम trick थी just now, जिसका बात might बोल I रहे थे वो presume लोग, आई that you थिंक. are well versed in floral symbolism? For example, Okay. magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. ओके. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious. Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to Okay. the end of our interview. ओके. I, for one, please feel free to get in touch to update ये देखा me देखा on देखा any कितना further जिगल फिजिक्स हो रहा है. developments. Otherwise, I will Oof. of course see you at your show in 3 days. थोड़ा सा भी time. हिलता नहीं कि Let's पूरा hope जिगल that फिजिक्स आ weasel is जाता है. caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that वो भाग गया. So, Lenny, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. ओ भाई, पाइमोन पहले ही चीज पूछता है कि सीक्रेट बता दो मुझे भाई. Magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You feel it too, right? So itchy. गुजा दे Not so ट्रैवलर itchy इसको, then, huh? पाइमोन को. Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? पाइमोन is like Excellent. पाइमोन. Thank you for putting your trust in moi. The Moink. first thing we need to look into is Moink, who moink, moink. Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. अच्छा. But if he wasn't the weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. Okay. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she Gemma, visits the Gemma, cemetery ये नाम कहीं तो often, सुना so है. I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with... जेमी एंड जमा ऐसा करके कुछ तो नाम था. अच्छा, गिफ्ट ये अपने क्वेस्ट आइटम पे रह गया है क्या अभी? कंफर्म. या मिल गया ये क्वेस्ट आइटम. ये देख, चाइल्ड का विजन. और एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, चाइल्ड का जो ये नॉर्मल अटैक करते हो ना, इसका विजन गायब हो जाता है. 1 2 3 4, ये देख गायब हो गया विजन. ये देख फिर से आ गया विजन. देखा? लाइक दैट्स अ वेरी कूल डिटेल्स कि चाइल्ड पे अभी विजन नहीं है. ये देख, नहीं है विजन, अभी आ गया. पता नहीं इट्स अ ग्लिच और व्हाट, बट दैट्स अ प्रीटी कूल डिटेल्स कि आफ्टर 4.1 जब से ये चाइल्ड ने अपना विजन दे दिया है, तब से उसका विजन ऐसे गायब हो रहा है फॉर सम ऑड रीजन. इफ यू डोंट नो, दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग इफ यू डोंट नो अबाउट इट. ये गया मैं. No time to lose. ओ हो, ये क्या है चल रहा है? 76 to 86. यहाँ पे क्या चल रहा है? पीपल आर मोर्निंग. ओके, यहीं पे तो शायद वो अपना निवलेटर खड़ा था ना लास्ट पे, निवलेट ग्रीफ के लिए. You took your time. Sorry, I bumped into the traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. मुझे लेनी का लाइक जो आउटफिट है ना, वो बहुत अजीबोगरीब लगता है. इस लाइक छोटे छोटे बेबीज नहीं रहते जिनको एक लाइक टाइट वन पीस स्विमसूट पहना दिया जाता है, वो वाला टाइप का लगता है. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel.
Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Easy to Traveler, remove. let's go ask around. Infamous with his infamous chat. Easy to remove. Okay, bye. Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiance? Sure I do. What's this about? Acha. I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Acha. Okay. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone. Lost. I asked her what she was doing. Infamous, once. मुझे She अपना said एक chat अगर she तू wanted देख to रहा है तो speak मुझे to एक him चीज again. बता कि why Gemma is always coming here She knows he's gone and in your can't one hear way. from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiance all about how her life is going. Okay. And she's been doing this ever since Caesar passed away? I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers Okay. him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual. I'm not today. focused. Normally, I'm she'd not be focusing sitting in front there. of his Maybe grave by a now. dead I wonder if she's okay. fetish. Maybe a dead fetish. अरे उनको क्या Well, कहते हैं that's जो डेड everything I बॉडीज know, के I'm साथ afraid. करते हैं ना लाइक Might have आई more डोंट नो luck व्हाट asking दे आर some कॉल्ड other बट या देयर आर पीपल हु एक्चुअली डिड दैट काइंड ऑफ स्टफ विद दैट ही डूइंग ये तू All right. You're welcome. ओ भाई ये अच्छा है विद बोन्स Did you hear the news? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, bones are what if long you this see weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. ओ भाई Seriously, 10 years ago on the day it all went down, ओ I भाई said to इस पे myself, you know what? This That's pretty guy's good. been set up. Oh, please. ना ये लॉजिक अच्छा Weren't है you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, "Oh, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy," or words to that effect. lousy son of a Wait, नहीं बोला did I say that? I don't seem to recall. मुझे ये लाइन बहुत पसंद आया Hello son of a Sorry for disturbing you. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. they need to make Do you sure think it's a you can spare a PG-13 minute game to tell so us a yeah little bit about Caesar? You've come to the right people. यही अगर Yep. कोई और गेम होता तो सीधा I was बोलता there. son of a Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always Okay. used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. what Huh. okay He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. okay As but I'm sure you know, बट वो the अपेयर Phantom क्यों Weasel करवा रहा है would फिर steal अगर just उसको about स्टील ही करवा anything करना from है तो anyone. उनको फिर से देना क्यों है Whatever the case, now that the weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. और मेरा उंगली में कुछ I bet घुस गया Gemma must be स्प्लिंटर आ गया pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. हाँ people like Oh, him Speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. okay So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come on. okay
किसी ने उसका पकड़ के धुलाई कर दिया। हाथ का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कि उसका हाथ पे अभी बैंडेजेस लग गया है रैशेस के वजह से। Don't be afraid. We mean no harm. It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? My name is Lenny, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. I promise you can trust us. ओके We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you लिनी का safe. ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा स्मूथ नहीं है, लाइक दिस एरिया इट्स लाइक ही डोंट हैव I एनी। never believed that he was ऐसा the तो होना wizard. नहीं चाहिए। आई सी लेनी एंड लेनेट एज सोडा एंड आकी, और यू से रूबी एंड Huh. I suspected as much. क्यों Okay, so क्यों going back to know, व्हाट द हेल व्हाई? Who is love? हाँ लाइक एक्वा रूबी की तरह हो सकता है, लाइक उन दोनों का आंखें का कलर ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली एक्वा और रूबी का कलर बहुत अलग अलग है। उसका एक्वा कलर है, रूबी कलर है, बट इन दोनों का आंखों का कलर सेम है, इवन हेयर स्टाइल है सेम। तो या भाई गया कहाँ देख रहा है उसका। Alright, नहीं, आई जस्ट sorry नोटिस for लाइक disturbing इतना you. टाइट आउटफिट पे होता है ना, लाइक एक बम्प टाइप का रहता है ना, बम्प तो है ही नहीं उसका, लाइक इट्स क्लीन एज, लाइक You don't have any प्लेन more एज, questions. क्या बोलूँ उसको, Please लाइन leave. स्ट्रेट एज अ लाइन। ऐसा ले स्ट्रेट एज अ लाइन तो होना नहीं चाहिए इतना टाइट आउटफिट पे। Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. हे रेंजर, लेनी तो थोड़ा सा ये लगता है मेरे को लेनी। She's lying. She definitely जस्ट बिकॉज ही इज मैजिशियन, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो तुम लेनी को। That's fair. We're just a Oh, bunch bhai, of that's strangers who racist. showed up and started Because questioning of her the about things thing that happened a whole he decade ago. wears on It his makes sense that she'd be हाँ wary एक्चुअली of कह her. In सकते any हैं काइंड case, ऑफ। I doubt we'll get any further here, so let's तुम call it कह a सकते day. हो कि ही इज Meet me ऑलमोस्ट outside लाइक ए the hotel at the door बॉन्डेज tomorrow, प्लेयर, and then we'll start लाइक the next step of our ही plan. लाइक बॉन्डेज स्टफ, आई थिंक BDSM वाला स्टफ। ये कहाँ पे गया, जाना कहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट डे 12 तक बोला ना उन्होंने, ठीक है हम वेट कर लेते हैं 12 तक। मैंने तो मोस्टली तार का गर्ल को पहनते हुए देखा था बस। हु नोज, तुम्हारा प्रोबेबली उन्होंने इंस्पिरेशन वहीं से लिया है। हु नोज, ऐसे होयोवर्स वाले क्या करते रहते हैं कुछ पता नहीं किसी को। सो डज दैट, क्या बोलते हैं? हाँ मैं तो एग्री कर रहा हूँ तुमसे, लाइक हु नोज कुछ भी हो सकता है इस जगह पे। होई हम लोग जाएंगे उड़ उड़ के। ऐसे मुझे यहाँ पे क्रोसॉन्ट का वो चाहिए, रेसिपी चाहिए। क्रोसॉन्ट का इन्होंने अभी तक रेसिपी ऐड नहीं किया। आई रियली वांट टू सी क्रोसॉन्ट, लाइक आई वांट टू ईट क्रोसॉन्ट। Over here. यूज चीज़ी को, उस चीज को, कौन सा चीज को बात बोल रहा है? लाइक चीज इन द सेंस, लाइक चीज वाला चीज, या फिर चीज इन द सेंस थिंग वाला चीज? याद आ गया, लीसा भी तो ना। अच्छा वो, अच्छा समझ में आ गया, लाइक Still, थाई गार्ड्स, हाई थाइज, और क्या कहते हैं इनको, हाई थाइज कुछ तो ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं। थाई पे जो पहनते, हाँ हाँ मुझे पता चल गया तुम क्या बात बोल रहे हो। थाई गार्ड, थाई हाई लेगिंग्स कुछ तो बोलते हैं, लाइक
He's since टाइट्स left आई the गेस magic scene though, and these वो days he's a लाइट wealthy पे businessman with his जो fingers in a lot of different पहनते हैं, pies. थाई पे जो पहनते हैं, हाँ अरे इनको क्या कहते हैं, लाइक मैं भूल गया एक्चुअली, आई रियली फॉरगॉट, थाइस, टाइट्स, स्ट्रैप, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं, बट अभी याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में ही नहीं आ रहा है। But I managed to get him to agree मुझे to समझ a में आ couple गया, of बातों drinks को with मैं me. समझ गया, लाइक भावनाओं को तुम्हारा Be समझ गया, warned, बातों को though, भूल जाओ, अभी I'm भावनाओं sure को he's got समझो, a तो hair चलो trigger भावनाओं के थ्रू temper. बातें करते हैं। We'd best be careful. हाँ हाँ वही वाला सीन, मुझे आई थिंक सो, लाइक आई थिंक सो टू, बट मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं, तो या दैट्स दैट, बट भावनाओं को समझ गया, इतना ही काफी है अभी के लिए। अभी हम लोगों के सामने बॉटल ऑफ वाइन है, लाइक वो You वाटर है। neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. My apologies. These two are my assistants. When they Okay, heard that I was assistant meeting बन with गया the हम लोग। former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. ओके What And a story. if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. अभी हम लोगों को ऑटोग्राफ भी मिलेगा एक, गाइस ऑटोग्राफ ले लो। टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, साइनो का वॉइस एक्टर जो है, नाम भूल गया मैं, बहुत अच्छा है ऑटोग्राफ, मतलब वो करता है। ठीक ठीक हाई लिखा आ रहा है गूगल पे, ठीक थाई हाई लिखा आ रहा है, हाँ वही तो मैंने बोला, थाई हाई कुछ तो कहते हैं उसको, लाइक जो भी हो समझ जाओ, लाइक अभी भावनाओं को समझ जाओ इस चीज पे। Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is बट also मोस्टली ये related to magic. गर्ल्स पहनते हैं, लाइक ये भी पहन रहा है, इज काइंड ऑफ वियर्ड टू बी ऑनेस्ट, Yesterday काइंड ऑफ morning, वियर्ड। a warning letter from the Phantom एस डी Weasel के appeared on the entrance to the फिशनेट Opera House. He claims to be बोलते planning हैं, something for the same अच्छा वो evening बोलते हैं, that I'm पता नहीं, scheduled नहीं to do a वो नहीं magic show पाजी, there. वो उसका बात नहीं As बोल रहे हम such, लोग, I हम लोग believe बात that कर I रहे हैं may कि well be लेनी का his जो target. जो वो स्ट्रैप वाला सीन है ना, जो बेल्ट टाइप का दिख रहा है, उस चीज का I बात have है। to ये get to देखो the ये bottom बेल्ट of this वाला to सीन, ensure that my इस show चीज can को go क्या ahead as बोलते हैं मुझे planned. नहीं पता ना। Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about पेंडेक्स Caesar. वही तो नहीं पता ना क्या बोलते हैं, गूगल पे उसने रेंजर ने सर्च किया, उसने उसने बोला कि हाई थाई कुछ बोलता है उसको, What is तो there to वही पता नहीं, यही चीज चल रहा है अभी। ऐसे वेलकम टू स्ट्रीम पाजी। Caesar was the weasel, and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. ऐसे पाजी ये अपडेट आया है इसमें अभी, लाइक जेंशिन में, अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हो। फिशनेट लेगिंग्स लग क्या अलग है, Possibility. पता it's नहीं a एक्चुअली लाइक weasel. सीन क्या है, बट कुछ तो है जो इसको पहनना नहीं चाहिए था, लाइक एज ए लड़का हो गया, ये बेल्ट टाइप का सीन। This investigation, it'll lead you nowhere. Look, if this affects your मछली magic का show in जाल any way, जैसा I will है, personally मछली के जाल compensate you जैसा for है, your हाँ वो losses. हो सकता है। Sir, I'm honored. I have really. no idea, to be But honest. this I have isn't about literally no finances idea for about me. women fashion. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet. ये and I copycat must क्या meet बोल their रहा है? challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. मैं वो I have to know for स्ट्रिप myself की what बात really happened कर 10 years रहा। ago. हाँ मुझे समझ में आ गया, तुम उसी स्ट्रिप का बात बोल रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया उसको क्या बोलते What do the हैं। events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really अच्छा, care about your magician's थैंक यू फॉर pride, दिस नॉलेज, then you'll forget मुझे पता ही about नहीं था। Caesar and move on. Uh-oh. This is getting awkward. ट्रैवलर कुछ बोल दो। Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. अच्छा What's up, ऐसा my क्यों लग रहा है man? कि ये ड्रंक है? Want to grab a drink with me? Another day, I'm busy. Oh, come on! You can't be all business all the time.
अभी क्या लिखा, अभी वो जो भी है मेरे को तो उस पे अभी इस पे क्या ही बोलूं, गधे उसको गटर होल्डर बोलते हैं। अच्छा ओके, गटर होल्डर है, अच्छा मुझे नहीं पता ना पाजी, मुझे कैसे पता चलेगा? आई अब मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा वो Good चीज, sir, I don't believe I've had the. तो मुझे कैसे पता चलेगा वो चीज क्या बोलते हैं उसको? He and I are business pals. We work together. और स्टॉकिंग होल्डर भी बोलते हैं, हाँ मतलब This is your first time meeting कुछ तो him? बोलते हैं, लाइक अभी मुझे पता चल गया, नाउ आई हैव द नॉलेज। Foul mouth and hard and he अभी हम भी wonders एक्सपर्ट why बन you गए can't उस चीज get पे, a girlfriend लाइक आइदर उसको स्टॉकिंग होल्डर बोलेंगे या फिर गटर होल्डर बोलेंगे, लाइक होल्डर होना चाहिए। 30-something. थाई होल्डर भी बोल सकते हैं, पता है पाजी? Like, thigh holder, older if than that's the when he thing. first got rejected by the girl he was into. And he's still into, from what I hear. Shut up What? and get out of my What? face. Another word What? out of अभी you अभी and you इसने can क्या forget about बोला? doing business with me ever again. Do I make myself clear? Sorry, I may Oh, have भाई। had a little too much to drink. All right. अरे मेरा हाथ में पता आज स्प्लिंटर घुस Don't गया work too पाजी, hard. बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, वो भी अपना जो बैंड वाला जगह पे। उस I think it's high time I made a move as वो well. If you really वो want to शर्ट के लिए है, investigate this, कौन सा वाला Leney, शर्ट be के my लिए है? guest. कौन सा वाला? लाइक But होल्डर if वाला, nothing good गटर comes होल्डर, of it, उसका बात don't बोल रहे हो say या I फिर didn't warn you. स्टॉकिंग होल्डर? स्टॉकिंग में तो स्टॉकिंग लिख रहा है, वहां पे शर्ट कैसा आ गया? लाइक शर्ट के नीचे स्ट्रेच करके रखते हैं वो होल्डर। अच्छा लाइक इन करने के लिए ना, शर्ट को लाइक इन करके पहनने के लिए, जिससे कि शर्ट टाइट रहे और स्टेडी रहे, उस चीज का बात बोल रहे हो क्या रेंजर? Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. पता नहीं अभी क्या ही बात चल रहा है, मुझे नहीं करना है अभी ये वाला चीज। आई हैव लिटरली नो आइडिया। रुक जा एक बार देख ही लेता हूँ गूगल I पे need to look क्या into कहते हैं Lorenzo more उसको। closely. ए गूगल महाराज बता उसको क्या कहते हैं? स्टॉकिंग गार्ड होल्डर बोले ना पाजी? स्टॉकिंग होल्डर देख ही लेते हैं। स्टॉकिंग होल्डर नहीं पाजी, स्टॉकिंग होल्डर पे तो ये लोग सॉक्स का वो दिखा रहे हैं, लाइक सॉक्स का पिक्चर आ रहा है। गटर होल्डर पे हो सकता है, रुक क्या। हाँ ये गटर होल्डर ही है, हाँ सही बोला, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला ठीक है, गटर होल्डर ही है। अच्छा रेंजर उसको गटर होल्डर बोलते हैं, पाजी ने सही बोला था। हाँ वही 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 गटर, वही देखा तो मैंने अभी अभी। नाउ मैं कंफर्म हूँ कि वही है, क्योंकि गूगल पे भी मिल गया मुझे। बट इसने बाहर क्यों पहना? नॉर्मली तो वो अंदर पहनते हैं ना, लाइक शर्ट के अंदर या फिर पैंट के अंदर। पाजी इज ऑलवेज राइट, डोंट फॉरगेट। हाँ वो तो है, इस पे तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, लाइक ये बात तो है। ये बहुत पुराना, मुझे क्या पता पाजी, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, और देखा भी नहीं है मैंने कभी, तो या वो वाला सीन है। और मुझे जितना पता है कि ये तो नीचे पहनना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना ऊपर पहनते हैं। वो लड़कियों के लेकिन जैसा लगता है। अच्छा हाँ हो सकता है, एक्चुअली पता नहीं इन्होंने इसको क्यों दिया है ये वाला डिजाइन, बट या दिया है तो दिया है, कुछ नहीं कर सकते हो। You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must जिसको have had स्क्रिप्ट one से too. होल्ड करना होता just है। need to- हाँ समझ में आ गया, वही तो गटर होल्डर बोलते हैं उसको। मैन गटर्स भी आता है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या पाजी? ये भी, ये तो मैंने I नहीं say देखा। way too much होता back भी है then. होगा। I nearly talked myself. सोच रहा हूँ कि खरीद लूँ मेरे लिए भी, फिर Hey, खरीद के मैं भी पहन लूँ ऐसा वाला। Keep your voice down.
Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen. What kind of bad thing? Don't Oh, even ask. बस I'm sorry. still उसने I'm gonna have to cut this ये conversation short. I'm not crossing that पहना line again. है। अभी तुम अगर सब चीज पे उसको पकड़ोगे तो कैसे And चलेगा? take it from me, लाइक trouble with उसको अभी Lorenzo अपना is one फैशन thing you सेंस है won't ना, need in उसको your पहनने life. दो ना, You saw उसको him जो flare पहनना up है। back there. I don't know what you said. मैजिशियन है, That's उसको not a good पहनने दो। sign. You're too young for this. शायद Don't परफॉर्मेंस के get लिए in चाहिए over होता है, your लाइक head. मैजिशियन है, उस पे कुछ रखता होगा। Leaving. हो भी सकता है। ओह, And there he goes. Shh. I think we're being watched. अच्छा, Someone was listening in to our whole conversation. ये देखो जेम्स बॉन्ड है पीछे, या फिर कोई तो है पीछे। Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. ओके, अभी फाइटिंग होने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, कहाँ पे गया? यहीं पे तो था अभी अभी वो जेम्स बॉन्ड का छोटा भाई। और जो शर्ट के लिए होता है उसको सस्पेंडर बोलते। अच्छा, ओके, सस्पेंडर वो भी सही है, एक खरीद लूंगा फिर मैं भी। एक देखना है कि कैसा फील होता है, मतलब उस चीज़ पे। लाइक ऐसे लोग अगर बोलते हैं कि सभी लोग पहनते हैं, लाइक दैट शुड बी फॉर समथिंग, लाइक मैं देखूंगा खरीद के एक बार पहन के, ऐसा वाला कैसा लगता है शर्ट को ऐसा टाइट टाइट रख के। लाइक तो फिर लाइक जितना भी मैं मूव कर लूँ वो शर्ट उसी जगह पे ऐसा ही रहेगा, लाइक इन ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इट्स अ रियली गुड थिंग, आई थिंक सो। ऐसा आपके You've पास है क्या followed us पाजी a वो long चीज? way. Why don't you come out and introduce yourselves? ओ भैया, एक था, अभी तो So चार you're चार आ Lenny. गया। And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Save your questions, missy. You ain't Okay. gonna need answers where you're going. Capiche? Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. अच्छा, Don't worry, we got this. 8,000 करके लग रहा है। एक ठीक है, ठीक है। सिग्नेचर वेपन है, नोबलेस पे बिल्ड है, अगेन 333। ओके, बोलता है कि आई एम नॉट ए फाइटर, बट इसका तो डैमेज तो बहुत अच्छा जा रहा है। ये तो गलत सीन है Curses. भाई। पहले अंडरवेयर उसके ऊपर से उसको ऊपर पहनते। Vision wielders are always क्या trouble. बातें चल रहा है Come यहाँ on, पे? let's scram. ये क्या ही चल रहा है? ये कौन सा बात है? हाँ ऐसे, हाँ वो तो है, बट इसने बाहर पहना है, इसका इसका मर्जी वो। ये सुपरमैन वाला थ्योरी नहीं है? सुपरमैन जैसे चिड्डी बाहर पहनता था अंडर के जगह से, ये वही वाला सीन है। इसको बाहर पहनना है ना के अंदर, लाइक सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। Oh, they got away. Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. And they've already done it to someone else, but who? You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. हॉट शॉट पहन लिया है, इसका बाहर दिख रहा है। अच्छा, ओके। गर्मी मूवमेंट पे तकलीफ नहीं आता, स्पेशली गर्मी में। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता एक्चुअली। मैं तो शादियों में भी इंटरनेशनल होके रहता, मतलब इंटरनेशनल होके रहता, मतलब तो छोटे जर को ये क्या बात हुआ? ये क्या बात हुआ रेंजर? ये क्या सीन है? ऐसे हो भी सकता है, क्या पता। ये हॉट शॉट इसके लिए बाहर
दिख रहा बर्थडे बर्थडे शूट में बर्थडे शूट में गरम कर कोई नहीं होगा कोई गुनाह नहीं होगा। Let's head back to the cafe and see. क्या ही चल रहा है। ऐसे बर्थडे सूट बहुत दिन से नहीं पहना है, लाइक ऐसा वाला सीन है, लाइक इट्स बीन ए सो वाइल्ड, No time to lose. लाइक फॉरएवर हो चुका है उस चीज पे जाए हुए, लाइक एक बार जाना है। बट सीन इज कि कोई ना देख ले क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। सुबह नहाया नहीं था, ओ अच्छा हाँ, बट वो तो थोड़े सेकंड के लिए, उसको थोड़ी ना कह सकते पाजी, नहाने को थोड़ी ना बोल सकते ऐसा। लाइक ऐसा होना चाहिए ना, मैं पब्लिकली ऐसे ऐसे घूम के आ सकता हूँ, लाइक घूम फिर के दिन रात दिन भर रह के, लाइक उसके बाद आके सो जाओ, वो वाला सीन, लाइक एक दिन के लिए ऐसा वाला होना चाहिए। You again. We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. Okay. So you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Sounds like they're no strangers to you. ओके That's putting it mildly. I know them all आपको too कैसे well. पता? And What I you mean hate by them आप with मुझे every कैसे fiber पता? of my being. It's been कौन सा 10 चीज मुझे? long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not बात to में do सब anything चलता है। stupid. नहीं नहाते नहीं, मैं नहाता नहीं। What you mean by तुम नहाते नहीं? How do I know I What you can mean by trust तुम you? नहाते नहीं? Do you really think you can get to the bottom of it all? And Wait what? why are you doing this? Wait what? ये क्या बात चल I'm रहा है? afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ चैट मिस कर दिया? How can I help you? क्योंकि नहीं ऑल मैसेजेस पे ही है। वो क्या है रेंजर, चैट में रहा बदबू मार रहा है ना, तो पता चल गया। I've heard that Caesar ये used to क्या have a सीन magic है? workshop where he kept a lot of his personal ये क्या effects. सीन है? If possible, I'd like to take a look at them. आज ऐसे तो पता है पाजी, आज तो बहुत ज्यादा मतलब सूरज भी निकला है और बारिश भी गिर रहा है, लाइक अजीबो गरीब सा वेदर है मेरे इधर। Do you know where it... The Fluvissant. लाइक मैं बाहर निकला वो खाने के लिए, खाना लेने के लिए, लाइक बाजार में निकला था, वहाँ पे देखा कि बारिश भी गिर रहा है, एक टाइम पे धूप भी है, लाइक अजीबो गरीब सा माहौल है। आधा रोड पे बारिश गिर रहा है, आधा रोड पे वो है, तो आपका क्या कहते हैं, धूप निकला हुआ है। ये क्या I सीन है? also know that the लाइक रोड के उस पर Fluvissant जितने भी is लोग हैं वो dangerous छाता territory. लेके जा रहे हैं बिकॉज Lots of बारिश, और इस साइड पे hostile जितने भी वो भी groups छाता लेके lurking जा रहे हैं बिकॉज ऑफ If you're धूप। serious about going there, Understood. बहुत अजीब गरीब सा वेदर Annette, था, you stay लाइक here and हाफ take एंड care of हाफ था। Gemma. Don't let her come to harm. लाइक आधा साइड बारिश गिर रहा है, आधा साइड पूरा वो है, लाइक धूप है। जैसे मेरे घर के ऊपर बारिश चल रहा है लेकिन साइड पे धूप But है। if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay sharp too. They're likely to come for you while I'm जब away. उल्फ की शादी होती है तब ऐसा होता है, उसको रेन बोलते हैं, नेकेड रेन बोलते हैं। वाओ, हाँ बट उल्फ का शादी के साथ इसका क्या लेना देना? लाइक उल्फ शादी भी करता है क्या वो लोग? मुझे तो लगा वो लोग तो जब भी चाहे तब भी, लाइक एक मंथ रहता है उनका, उसके बाद हो जाता है उनका। लाइक उल्फ लोग, और अपने इधर तो उल्फ है भी नहीं, ये भी बात है। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, पार्क एवेन्यू का डीओ मार के रखा है ऐसा कैसे हो बुरा मारो क्या, साइड में ये रखा है ऐसा बोलते हैं। इट्स नॉट लेजिट। ओ अच्छा ऐसा बोलते हैं, अच्छा ऐसा बोलो ना, कहावत है कि उल्फ का शादी पे ऐसा होता है।
मुझे क्या पता पाजी, आप मुझे तो लगा सीरियसली आप बात बोल रहे हो कि वो लोग लाइक शादी वादी हो जाता है, तो वही बोला कि ये क्या सीन है। जाना किधर है मुझे? अच्छा, दोबारा मारू क्या? साइड में ही रखा है, मार ले रेंजर दोबारा। क्योंकि ये सब बोलते हैं इट्स, हाँ वो तो पता चल गया पाजी, वो वाला सीन ये लेजिट बात नहीं है। बट अभी मैं गटर में क्या कर रहा हूँ? ये क्या सीन है? मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब उल्फ बैंड भेजा, हाँ क्या लेके थोड़ी आएगा? हाँ बैंड बाजा थोड़ी लेके, मैं तो वही बोला ना, आपने ना बोला ना कि वुल्फ का शादी होता, तो मुझे वही जानना था कि शादी होता है, ये आपको कैसे पता चल गया? मुझे तो लगा वो लोग जब भी चाहे तब भी कर लेते हैं, लाइक उसके बाद हो गया, लाइक वो वाला सीन है ना, कि उन लोगों का कुछ ऐसा वाला रिचुअल टाइप का होता है। मुझे लगा लोग आओ आओ ऐसा करते हैं, बस हो जाता है उसके बाद। Looks like these boxes are blocking the entrance. कभी कभी होता है ना कि आप आओ आओ कर लेते हैं, फिर हो जाता है, तो या उसको शादी नहीं हाँ बट वही तो क्वाइटस का बात बोल रहे हो ना, क्वाइटस कभी कभी हो जाता है, लाइक उन लोगों का तो डायरेक्ट क्वाइटस होता है, लाइक ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने जैसा कि सबको जता के बोलना होता है कि क्वाइटस हो रहा है, बट क्वाइटस हो जाता है। तो ये जो भी बात है, ये क्या सीन है? हम कहाँ पे है? ओके हम लोग किसी एक और भी ज़्यादा सुअर पे घुस चुके हैं, सीवर पे, या फिर सुअर पे नहीं, सीवर ही बोलते हैं इसको शायद, बट आई लाइक सुअर वर्ड। यू नीड टू रीड पंचतंत्र एंड जाके झाका टेल्स। पंचतंत्र पंचतंत्र मैंने सुना तो है, हाँ जटाका टेल्स मैंने पढ़ा हुआ है पाजी, जटाका टेल्स। जाको भाई योर जेंडर रिवील व्हेन, मेरा जेंडर तो भाई मेल ही है, आवाज से तो पता ही चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम अज्यूम कर लो कि मेरा कुछ अलग जेंडर है। ये क्या है? So this was Caesar's workshop. So जटाका टेल्स मैंने पढ़ा है, लाइक प्रीटी गुड। वो भी बचपन में शायद वो टीवी पे आता था, लाइक जटाका टेल्स। बट पंचतंत्र 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 वो भी देखा हुआ है, कैसेट आता था, मेरा डैडी ने समथिंग कुछ लाइक बापूजी ने कैसेट लाया था पंचतंत्रों का, वहाँ पे कुछ कछुए वाला स्टोरी था, जो कछुआ उड़ना चाहता था बट उड़ नहीं पा रहा था, समथिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ स्टोरी थे ऐसे। करना क्या है मुझे? अटैक पपट। हाँ हो गया। GNDR है ये। ट्रांस GNDR क्या होता है पाजी अगेन? वो ओके। So long as the audience thinks that seeing is believing, there's no limit to the number of ट्रांसजेंडर है ये। What do you mean by ट्रांसजेंडर हूँ मैं? ट्रांसजेंडर कब से बन गया मैं? ये क्या बात हुआ? मैं कब से ट्रांसजेंडर बन गया? ये तो गलत सीन है पंच। ये कब बन गया मैं? ये जाके टेल्स बुद्धिज्म पे है। अरे नहीं जटाका का बात नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पंचतंत्र का बात बोल रहा हूँ ना। पंचतंत्र मतलब वो वाला सीन है ना। आई हैव नो आइडिया, अभी मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ पाजी, देखना पड़ेगा मुझे। अभी ये चीज तो मुझे देखना पड़ेगा, है मैं भूल गया। कोई नया जेंडर आया है मार्केट में? नहीं ऐसा नहीं है।
जटा का टेल बुद्धिज्म पे है, कछुए पे पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा पाजी, मैं भूल गया अभी, ये चीज में कंफ्यूज हो गया। There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, ये क्या करना पड़ रहा है मुझे? ऊपर मारना है, बलून से यहाँ पे बहुत सारे। बट यहाँ पे कुछ है? नहीं है। ऊपर कुछ है? नहीं है। इसके ऊपर कुछ है? नहीं है। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर लेके जाओ। और ये चमक क्यों रहा है इसका कैट? यहाँ पे आग क्यों जल रहा है? That's something new. इसका यहाँ पे आग जल रहा है। These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. ओके, समझ में आ गया क्या करना है। और तू बुद्धिज्म पे स्टडी के लिए रूपे गया था अरे नहीं पाजी, ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग टाइप का सीन था। वहाँ पे हम लोगों को लाइक उनके नेचुरल लैंग्वेज में जो है, लाइक चटगिया लैंग्वेज पे वहाँ पे बताया गया था, तो हम लोगों को चटगिया लैंग्वेज सीखने में ही टाइम लग गया। आज सुबह से लाइट नहीं आ रहा, आज सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, मैं चलता। ओके टाटा रेंजर, तेरा दिखांड वाला फोटो भी हमें रेंजर लाइट नहीं है या करंट नहीं है भाजी, लाइट नहीं है ना, वो लाइट नहीं होता है ना, काइंड ऑफ लाइक। ओ भाई ऐसा कैसे हो गया? करंट नहीं है, लाइट नहीं है, सेम ही तो चीज़ है ना पाजी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइक लाइट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। हाँ लाइट एक्चुअली नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी इज वो वाला सीन है। बट इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे लाइट वाला सीन आता है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का पहला पर्पस ही होता था लाइट वाला जलाना, बट लाइट वाला एक नहीं जला सकते बिकॉज अभी मेरा अलार्म बज गया। That's weird. Have we reached the end already? अभी भी तेरा ये लाइट जाती है कि करंट? एक्चुअली पता नहीं, लाइट कैंडल से भी होता है। हाँ मतलब देखो ना, देखो अगर वो पुराने जमाने का बात बोले, This was a wasted trip. जब हम लोगों के पास वो नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, और हम लोग रोशनी के लिए अपना वो जलाते थे, लैम्प्स या फिर मोमबत्तीज या फिर वो जलाते थे। तो तब से, और जब उन्होंने बल्ब का वो किया, बल्ब आया, तब से वो लाइट के लिए लाइक वो एसोसिएट हो चुका है, लाइक लाइट इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू करंट, लाइक वो वाला सीन। सो even though light is not light, but even current is not current, but still current is light is current, but at the same time current is not light and light is not current, or something like that. तो समझ लिया करो। अनसब कर दो क्या? नहीं ऐसा नहीं करो लाइक आप तो मेरे लौते मॉडरेटर ऐसा ना करो। बहुत अरे मैं तो फैक्ट्स बोल रहा था, लाइक फैक्ट्स कहते हैं ना, फैक्ट्स। ओह सीक्रेट डोर, A secret passageway. I'm a magician too. And apparently great minds really ऐसे do पाजी आज think रात को alike. वैलोरेंट खेलना है क्या? Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. ऐसे कल तो आप तो शायद बाहर थे, इसलिए मैंने फोन ही नहीं किया आपको कल, आई गेस, अगर सही हूँ मैं तो। एक बात बता, तेरा ये इलेक्ट्रिक कंपनी लाइट करंट भेजता है ना, तो वही तो, लाइट नहीं भेजता। मैं तो बोला कि आपने सही बोला है, बट वो भी है कि बहुत से लोग अभी भी लाइट के साथ वो करंट को वो करते हैं ना, एसोसिएट करते हैं। तो A round of applause.
ठुम 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 दुम 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 दुम। करंट गया ना, लाइट करंट गया। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप सही हो, लाइक आपसे तो मैं आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा हूँ कि आप तो सही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रात को 11 बजे आया मैं। हाँ वही आपने बोला ना, आप कल शाम पे बाहर जाओगे कहीं पे, इसलिए तो फोन नहीं किया, वरना वैलोरेंट के लिए पूछता आपको कल, तो इसलिए मैं आज पूछता हूँ कि आप आज खेलोगे। हुई 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 हुई, ये क्या है? Why have you stopped, Lenny? Is there some device? अच्छा क्या फोन नया किया कल, वही घर पे भूल गया था। अच्छा आप फोन घर पे भूल गए थे, वो नाइस। ऐसा आपको ऐसा नहीं लगा पहले बार डर नहीं लगा आपको कि आपका फोन नहीं मिल रहा आपको? आप आधे रास्ते पे पहुंच चुके हो, आपका फोन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा डर नहीं लगा कि आपका फिर से खो गया फोन या फिर कहीं पे भूल गया आप, ऐसा वाला चीज? क्या करना है मुझे यहाँ पे? तो ऊपर जाना है। No time to lose. ये क्या है? एक्टिवेट द मैजिक स्टेप्स, ओके। ये करना क्या है? मुझे घर पे फोन आ गया था कि मैं भूल, अच्छा अच्छा तब तो ठीक है, लाइक अरे एक छूट गया वहां पे यार, अरे यार एक छूट गया वहां पे। बिफोर आई इवन रियलाइज दे कॉल्ड मी। अच्छा तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, वरना तो आप पैनिक पे आ जाते हैं, लाइक पैनिक सिचुएशन हो जाता फिर कि मोबाइल नहीं मिल रहा है। बोला पैनिक सिचुएशन होता है ना, लाइक तब तो ठीक है, लाइक आपको फोन मिले। ऐसे कि आपके पास फोन नहीं था तो किसको फोन किया था, कैसे फोन किया था, लाइक आपको कांटेक्ट कैसे किया? लाइक ये तो बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है, लाइक ये वाला सीन। आपका फोन तो आपके घर पे था, तो आपको कैसे कांटेक्ट किया उन्होंने, लाइक आपके घर वालों ने? ये तो वो अजीबोगरीब सीन नहीं हो गया आपको? ऑल लोग थे मेरे साथ, लाइक माय मॉम। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ तब हो सकता है, मुझे लगा अकेले अकेले गए होंगे एक बाहर। This book's thick as a brick. Let's take a peek inside it, shall we? हाँ हाँ समझ में आ गया। अबाउट विश लिस्ट। At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. ऐसा As भी a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अकेले नहीं जाऊं So I told them another white lie. The machine needs time to power वो up. तो है अभी In इस the पे meantime, you can write your नहीं, फिर भी wishes जा down. सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाओगे, बट took me या up on that offer. ठीक है, समझ में आ गया। Enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. बट हाँ I समझ में आ saved गया मुझे very little कि this हाँ month, ठीक है। but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Two children came to talk to me after today's show. गलत मत I don't दिखा know why मुझे। they were out alone. मैं I'm कहाँ पे? much too young to be unsupervised. I
do hope they got them safely. वो बहू जो मैं ही बैठी है इस पे देखो, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते, लाइक इस चीज पे। ओ, ये तो गलत ही सीन हो गया है। बेस्ट थिंग कि अभी वो थोड़ा सा आवाज म्यूट कर लो उस जगह पे। अगर आप हेडफोन पे सुन रहे हो तो बहुत सही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। आई एम इनोसेंट। It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. मैं तो बोल दूंगा तुम एडवाइस दिए। ऐसा नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है ना कि मैंने बोला था। लाइक यू डोंट हैव एनी प्रूफ पाजी, आपके पास प्रूफ नहीं है। तो मैं काउंटर वो करूंगा ना कि मैंने कभी बोला ही नहीं ऐसा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने कभी बोला है। तो मेरे पास एक की रहेगा। ये स्ट्रीम वाईटी पे। ओ मैं भूल गया था स्ट्रीम के बारे में पाजी। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं आपके साथ फोन पे बात कर रहा हूँ। ओके, तब तो प्रॉब्लम होगा पाजी, तब तो प्रॉब्लम होगा। एक काम कर सकते हो, मैं स्ट्रीम को प्राइवेट कर दूंगा। हाँ वही, अरे मैंने देखा ही नहीं। मैंने देखा मतलब वो समझा नहीं, मतलब तब मेरे दिमाग में नहीं आया जब मैं आपको बोल रहा था ये वाला सीन की आप मुझे फंसा नहीं सकते, मतलब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ। बट अभी तो बहुत बड़ा वाला एविडेंस है। ये तो गलत सीन हो गया। It's nearly time for me to go on tour. I asked the two kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. Okay. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough. आप मैंने क्लिप भी कर ली तो ओ भाई, अभी तो आपके पास सारे के सारे सबूत है कि ये अभी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम स्क्रूड राइट नाउ। लाइक मैं पिंच हो गया पूरा। It always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not after thinking things over. ये क्या चल रहा है यहाँ पे? I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods. तू चैट मोबाइल पे पढ़ रहा है? हाँ, एक्चुअली मेरा जो पीसी वाला चैट वाला सिस्टम था ना, वो वाला आपका कुछ गड़बड़ हो गया। स्ट्रीम लैब अभी मुझे चैट नहीं दिखा रहा है, ना ही मेरा यूट्यूब पे चैट लोड हो रहा है। पता नहीं क्या ही सीन हुआ है। तो मैंने मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ चैट अभी। I hope they won't find my nagging annoying. क्योंकि मेरा वो OBS में वो चैट वाला सेक्शन लोड ही नहीं हो रहा है। More harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that. PPS. Maybe I'm overthinking this. तो स्ट्रीम के बाद चेक करना है। हाँ, अरे नहीं, आज ही ऐसा हुआ है। लाइक नॉर्मली मैं ये पीसी पे पढ़ लेता बड़ा बड़ा वो करके फॉन्ट करके, बट आज पता नहीं मैंने चालू किया, अचानक से कुछ स्ट्रीम लैब का कुछ एरर आया। बोल रहा है कि वी कांट एबल टू लोड द चैट और समथिंग लाइक ऐसा करके एरर आया कि। लेकिन तब तक तो मैंने चालू कर दिया था स्ट्रीम, तो मैं बोला कि छोड़ो मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। मैं फ्री ही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं ये स्टोरी को इस करके स्ट्रीम बंद करके आता हूँ डिस्कॉर्ड पे। या ऑलमोस्ट हो गया आई थिंक। हम लोग लास्ट सेक्शन पे है स्टोरी को इसका। Sounds a lot like he was writing about Lenny and Lynette, don't you think? So did they meet Caesar when they were kids? Okay. Let's go ask Lenny. ओ नीचे चलो। बहुत सारे बलून से इतने साल तक ये बैलून कैसे है? एक फट भी नहीं रहे यार उसे मारने पे भी। ये कौन सा बैलून है? मुझे भी ऐसा बैलून चाहिए जो फटता ना हो। लाइक आई रियली लाइक दैट बैलून। बट ये थोड़ा पिंक पिंक टाइप का बैलून है। थोड़ा सा अलग कलर का, ब्लू कलर का बैलून होता तो बहुत अच्छा लगता। लाइक फट नहीं रहे हैं बैलून्स। बहुत अच्छे बैलून्स है, क्वालिटी अच्छा होगा इन बैलून्स का।
hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, what have you found? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make an appearance and put on a hysterical performance. Oh Okay. no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall, not without a vision at least. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. Okay. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? But आज I होगा. was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance. And it's not Thank you for as simple as subscribing. it looks. Inside, there's a device that only Hamik, the magician thank you. himself would know about. For subscribing. Much appreciated. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, Acha, and bottom. okay. But the back and the top are now no longer visible. Okay. At this point, the magician presses a button inside the ऐसा box, magic तो opening हमको a भी करना है secret फिर. door out of view. He then escapes through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Well, there's a little more to it than that, of course. Okay. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this. Okay. All culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician. But unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make Wait. a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And, sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. कुछ मिस किया मैंने नीचे गया था पापा ने बुलाया नहीं कुछ नहीं एक्चुअली
एक्चुअली कुछ नहीं मिस किया, मैं तो बस यही बता रहा था कि यहाँ पे मैजिक ट्रिक के बारे में कुछ बातचीत चल रहा है। लाइक दोनों उन्होंने बोला कि बॉक्स के पीछे से एक सीक्रेट डोर रहेगा जिस पे मैं बाहर निकलूंगा, कुछ मैजिक ट्रिक करने वाला है ये। People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will. The essence of magic is getting people to believe a lie. अभी ये मैजिक परफॉर्म करने वाला है कुछ, Truth raises I don't know, eyebrows. The but हाँ। falsehoods become all the more difficult to mask. Okay. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifice, but in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. ओके हैमिक जैसा, हाँ हाँ मैंने अभी अभी थैंक यू बोला वो वाला हैमिक को, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया मुझे अभी अभी सब्सक्राइब का। तो या मच अप्रिशिएटेड कि हैमिक ने भी अभी सब्सक्राइब कर लिया, एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरे चैनल पे। नॉइस। Under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was देख second नहीं nature. पा रहा, He barely needed to पता think देख about नहीं what पा he रहा है was मतलब doing because muscle memory would guide him through. ऐसा क्या हो गया? अब मतलब अभी नहीं देख पाएगा आई थिंक। रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन किया है क्या? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन नहीं है। आई डोंट थिंक सो। चाइल्ड के लिए तो ऑन नहीं है। मैंने यस नो पे रखा है मैंने, लाइक इट्स मेड फॉर चाइल्ड मैंने बोला। नो हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। मतलब लोडिंग का शायद कुछ इशू होगा आई थिंक। हेलो हैमिक, वेलकम टू द स्ट्रीम। With his left hand, he reached for the हो button, गया, and यस देख पा रहा हूँ। suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind फाइनली needed a moment लोड to हो गया process इसका what was मतलब। going on. नाइस। Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. Okay. With the stakes being as high as they were, just a How 2-second to delay cost welcome him everything. जाओ to The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death आओ तो was due वेलकम to his जाओ own तो error. बिरकुम मतलब बिरकुम क्या होता है पाजी? लाइक करो ओनली फॉर, अरे हाँ आज लाइक थोड़ा कम है बिकॉज स्टोरी क्वेस्ट खेल रहे इसीलिए। लाइक नॉर्मली थोड़ा लाइक आ जाता है, बट ठीक है अभी लाइक उतना ज़्यादा लाइक का नहीं है। It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. आयो तो वेलकम जाओ तो बड़े कम। मुझे अभी भी इसका लाइन का मतलब नहीं समझ में आया है। लाइक लिटरली मेरा दिमाग अभी शट डाउन हो चुका है इस लाइन पे। आओ तो वेलकम एंड जाओ तो वेलकम। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सच में। वेलकम टू स्ट्रीम रावण लंकेश, यो बिग फैन सर। ऐसा लगता है बट ठीक है, थैंक यू। You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of अच्छा people यही who'd go बंदा, to all this इसी बंदे ने trouble for मारा है some उसको। magician ओके who ठीक है। died 10 years ago. I didn't want to have, but I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappointed. मैं ही हूँ भाई पाजी। अच्छा ओके पाजी, ओ ऐसा कौन सा वाला आईडी है ये वाला? ये तो पता ही नहीं चला मुझे। Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just One more sub, wouldn't drop yep, it. एक और सब आ गया। सही है। Which is why you can't leave this place alive. Take them out,
and make it quick. अच्छा फिर से फाइट होगा यहाँ पे लग रहा है हम लोग। ये देखो कुत्ता है एक, वो भी मैकेनिकल वाला। वो ये क्या आ गया? Now disappear. वन मोर क्या लिखा? आओ तो स्वागतम, जाओ तो वही वेदकम। ये क्या होता है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, वेदकम होता क्या है? You kids are tougher than you look. लाइक मैं वही पूछ रहा, मुझे समझ में आ गया कि आओ तो वेलकम होता है, लाइक दैट्स द पार्ट अंडरस्टैंड, बट वेटकम क्या होता है? Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. वही तो पूछ रहा, वेटकम इसका मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ I रहा think है। it's high If I had a Mora for every, he was just an amateur who did cheap लिटरली इट्स नॉट लाइक कि बंगाली पे तुमने लिखा तो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, मुझे हिंदी में भी समझ में आ गया था क्या बोले, बट मुझे वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या है। वन मोर वही पाजी तो सब्सक्राइबर का लाइन लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है। थैंक यू। hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. He forbade me from using magic One to more. trick people out of their Mora. सबकी लाइन लगा रही है। हाँ वही में तो सबकी लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे। And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled Again, in my thank you, own Paji. money-making magic, he would expose ऐसे me. ऐसे ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का क्यों है सेम? अच्छा दो अलग अलग होंगे फिर जीमेल I had to आईडीज। kill him. आई There थिंक was no other way. He had to go. And this was your only It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are One you more the Phantom coming. Weasel? कोठा वाला। Oh, thank you for subscribing. Again. I am. Caesar was. One more coming. One more मतलब कौन सा वाला? He insisted that his way. I never bought into any of that. Oh, yeah! Charlotte told us that the weasel would... That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. 36 सब हो गया। हाँ वही देखा मैंने, एक ही बार में बढ़ गया, लाइक बहुत वो 31 से 36 हो गया आज। बहुत सही है। थैंक यू अगेन पाजी। ये क्या हो गया मेरा? So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? So be it. अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ये भी। Keep an eye on Lorenzo for me. ऐसे आपका लाइव चैट लोड नहीं हो रहा है आप लोगों का। हाँ अभी लोड हो गया। 9 लाइक्स। ओह थैंक यू 9 लाइक्स के लिए अगेन।
रुको 10 हो जाएंगे आई थिंक। रुक जाओ, मैं अपने ऑल टाइडिस आके अगर इसको लाइक कर दो अभी। यो 10 लाइक हो गया आई थिंक। फिर से चैट नहीं लोड हो रहा है, ये क्या बात हुआ? ये चैट का तो अलग ही नशा चल रहा है अभी। यूट्यूब चैट का लोड ही नहीं हो रहा। ये ले एक और हो गया आई थिंक। स्टोरी खत्म हो गया। तेरा नेट का साउंड स्लो है। वो तो पहले से ही पाजी, वो तो पहले दिन से ही है ऐसा वाला सीन। Leney has told me the whole story. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crime? ओह इतना Look who's finally developed a इतना What जल्दी kind of इसने disciple कन्फेंस भी कर murders दिया। their own master? I hope it was worth it, because there'll be hell to pay. Looks like it's all over. नेट हगड़ा है अभी, मुझे पता चल रहा है नेट हगड़ा है। Let me think. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. वो मर गया, ये मर गया, यहाँ पे जाके देख के आते हैं। आई गेदर 40 मिनट की स्ट्रीम हो गया। 1 घंटा 40 मिनट, हाँ वही थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा हो गया आज, लाइक 1.5 घंटे के जगह पे। बट स्टोरी काइंड ऑफ चल रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है तो या You're back. You were so quick. पानी पी लेता हूँ हम थोड़ा सा, पानी वाटर पी लेते हैं हम थोड़ा। Everything in moderation. You're not going to have any room left for dinner now. That's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. What? ऐसा कब से होने लगा कि शुगर खा लेने पे लाइक एक्सरसाइज करने से शुगर चला जाता है एक ही बार में दौड़ने से? That's besides the point. Well, it's done now. Bro, हाँ बोलो हमी, बोलो। In the future. Point taken. Did everything go okay? Of course. Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I had my suspicions about Lorenzo, but I... It's okay. We understand. He did threaten you. My mom would find it hard to trust strangers in your position too. पाजी क्या खेले वो? मतलब समझा नहीं ये हमें क्या बोल रहे हो? But you don't need to be scared anymore. Everything's समझा gonna नहीं be ये okay. ये चीज। Sorry. My emotions are all over the place right now. I always wanted to report Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious. But I had people watching me all the time, so I couldn't. मेरे पास एक क्लिप है जिसमें तू बोल रहा है वो पाजी क्या खेले। ऐसा मैंने कुछ बोला था क्या? वो पाजी क्या खेले, ओ अच्छा ऐसा मैंने बोला था शायद। आपका वैलोरेंट का शायद कोई क्लिप होगा आपका जहाँ पे आपने बहुत अमेजिंग प्ले किया था, क्योंकि हाँ वो वाला सीन मैं बोल सकता हूँ आई थिंक उसमें। अगर वैलोरेंट का क्लिप है तो जरूर बोला होगा, लाइक डेफिनेटली बोला होगा फिर। लाइक ऐसा तो मैंने 3-4 क्लिप पे शायद बोला है फिर, बट इट वाज इन ए फनी वे। फनी है जरा भेजना, जरा दिखाना जरा वो वाला क्या कहते हैं वो डिस्कॉर्ड पे दिखाना, स्ट्रीम के बाद मैं आता हूँ वहाँ पे दिखाना, देखना पड़ेगा। All this time while Caesar's name was getting dragged through the mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now. If only... Don't blame वो yourself, बहुत यहाँ पे Janelle. रोना ढोना You चल रहा still है। have the... Cheer up, Gemma. ओके ओके My ओके brother's ओके। doing it. This show will be a special... In Caesar's honor. Great. We'll see you tomorrow evening. Don't worry, we'll be there. No way are we gonna... टीम खत्म करके फिर दिखाता। हाँ 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 जरूर हो गया ऑलमोस्ट। ये जस्ट लास्ट वो चल रहा है, कितना बता रहा? 18 to 20। ओके 18 to 20।
18 to 20 ये रहा, हो गया खत्म ऑलमोस्ट। ये वाला कंक्लूशन वाला पार्ट चल रहा है अभी। ऐसे ही 10 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लिया आज मैंने स्ट्रीम, लाइक 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। Opera House। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अरे मेरा स्टैमिना खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये कुत्ता देख रहे हो, ऐसा कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक देखने में बहुत अच्छे है, लाइक डिजाइनिंग कुत्ते, लाइक डॉग्स काइंड ऑफ, हैट पैट पहने हुए है। Time to go. ओहो Time to go. Time to go. Paimon's excited to see another of Lenny's magic show! Not this time. My brother's going solo today. So, I'll be watching with you. Good evening, ladies and gentlemen. I hope साइफर जैसा दिख रहा है डॉग। साइफर की आगे नहीं दिखता है। वो भी है, साइफर जैसा दिख रहा है। वो तो है, वो भी है। Thank you all so much for coming. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Exciting stuff. Yes, it's just... No wonder. Caesar would sell... How did you two... Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Children love magic, because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute! Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never... That's right! Right. Yes, you can breathe easy now. See? Even when that says... The Phantom Weasel! Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom Weasel? As Lenny once said, a performer's job is to commit fully to their role. At Nightbird High। अरे पाजी एक बार पॉइंट चेक करना, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखना। मुझे देखना है कि आप लोगों को पॉइंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लाइक पॉइंट्स का सिस्टम मैंने ऐड किया है। Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time. What are you talking about? Paimon doesn't like this riddle. और एक बार एक्सक्लेमेशन टॉप यूज करना। Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something. ओके हाँ, पॉइंट्स तो आ रहा है, पॉइंट्स आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पे ऑडियो कैसे ऐड करना है पाजी, वो दिखा देना बाद में। आप अगर दिखा दोगे तो मैं ऐड कर दूंगा ऑडियोस, क्योंकि आज ही ऐड किया मैंने वो पॉइंट वाला सिस्टम, मतलब आज या फिर कल परसों ऐड किया था आई थिंक। नाइटबॉट सबसे ऊपर है,
600 There will now be a brief पॉइंट में हुआ intermission, भाई. after which Lenny will perform the final performance will take place अच्छा हाँ हो outside गया of the हो गया. Opera House. The Phantom Weasel never did like public places. Don't worry, this place will be quiet soon. ये क्या चल रहा है? एक बार आप अंदर आने बोल रहा है, एक बार बाहर जाने बोल रहा है. ये क्या सीन है? ये क्या है? Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, Lenny, Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? all in good time. मैं डिस्कॉर्ड पे ही हूँ. Magicians are good at guessing what जब people मन are thinking. करे आ जाना. हाँ हाँ ये हो गया ऑलमोस्ट. मैं आता हूँ. यही Well then, let's hear it. Paimon's dying. मेरा डिस्कॉर्ड अभी बंद है. चालू करना पड़ेगा. Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine, she never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Lenny? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was trying to hide. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. भाई बस अब और नहीं होता. पता नहीं, मैं देख रहा था स्टोरी पे क्या चल रहा है एक्चुअली. वही वाला सीन. Yes, why indeed? ये तो काफी ट्विस्ट था स्टोरी पे अभी इस जगह पे आके. enlighten us on that question. So मैं थोड़ा ध्यान.
If you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious, having killed Caesar with his own hands. Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved one. An excellent answer. Though sadly, a little... Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change Well. the topic to something more interesting, I'd be much obliged. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real Weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real Weasel must have had a terrible... left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. Okay. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of... That's some... Does this story... Yes, it is quite to my tastes. Huh. That's right! Because without that, none... She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Leney. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? Wait. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. It's been so long, and you're all grown up now. He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? We remember all our debts, however great or small. 10 years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget. And And? What exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has... Free? Do you really think so? Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Life took many things from you, and those... What are you trying to... I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? Back to Lorenzo for a second.
He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now, and I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom, Gemma. Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do gather around. What Okay. about, I'm sure you're all. A high altitude escape? I'm sure you all remember we have now learned. Guess that's my Okay. cue to leave. Traveler, Paimon, I hope you enjoy हाँ हाँ, हो the गया rest of the show. जल्दी 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 खत्म There करो. may be a lot of people watching tonight. Lenny, you two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. You're wrong. I'm nothing like you. So, Like Lenny said, when you're चला जा. Gemma! she'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lenny after the show, you know where he'll be. Alright. Well, ओपरा हाउस का बाहर जाना है. ओपरा हाउस ओपरा हाउस ओपरा हाउस ओपरा हाउस पे ओपरा छोड़ के सबको छोड़ा है. ये क्या बात हुआ? Okay, cutscene. You. Cutscene, cutscene. Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. it's alright. We're used to that. मेरा We're skip भी नहीं कर sorry. सकता हूँ. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lenny is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! ये क्या हुआ? Mysterious. Surprising. And logic defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. मुझे इसका टोपी चाहिए. ये टोपी क्यों नहीं उड़ रहा है? I'm just नीचे से sorry गिर रहा है. it's a अभी भी little इसके late. हेड में है टोपी. ये क्या बात हुआ? Did you see that? 1 minute he was falling, and the next, he turned into flowers.
How could he possibly have done that? How mysterious! What a heart-stopping magic show! Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's... Looks like everyone really loved Lenny's grand finale. हाँ but skip हो जाओ Lynette doesn't see Lenny anywhere. Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual hunt. But, oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's... Alright, let's go. ओह फाइनली खत्म हो गया प्रोबेबली और झेला नहीं जा रहा है स्टोरी क्वेस्ट बहुत लंबा जा रहा है खत्म हो जाओ Was scared to death. Magic is a performance. I was honestly a little nervous during the live performance. Okay. The thought of sometimes, did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up, right? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned... After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done, but I quickly realized that observation alone could only get me so thanks far. अब ये आएगा मैं ये गेम क्यों खेलने बैठा I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make भाई हो गया भाई छोड़ दे भाई that we'd made some progress by ourselves. छोड़ दे भाई So that's why you sought Caesar out? Yes. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so... For instance, but in truth, what amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten. Lenny... Still worried about... But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the House of the Hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. That night, to keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let... You only realize how much someone really... Yeah, we've had dessert, delicious food. You know, Traveler, doesn't that kind of make you Paimon's true? Exactly. It's the same for me and Lynette. ठीक है. Life has taken plenty from us, like that's why the darkness never consumed me. All right, time to lighten this. It was amazing. Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are Aw, come on. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because watch closely. I have a flower in my hand. नहीं है. You liar! There's nothing in your hand. We ain't going to... Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Let's see. Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Lenny, pretty... Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? Look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to thank you. अब मेरे तरफ से भी good night, good afternoon, good evening, good everything. Let's
ओह अबे अभी नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बाद में कल मिलते हैं, टाटा। एंड करते हैं लाइव स्ट्रीम यहीं पे। पाजी मैं आ रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे, टाटा।